Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the different methods for expressing accuracy in terms of the error. In the last lecture, we have discussed in detail about the accuracy and the precision. As we all know, in the chemical analysis, whatever may be the nature of the chemical analysis, whether it is the volumetric titration, whether it is the gravimetric experiment, or any other analytical experiment, in all these experiments we will find that all these chemical analysis will always be associated with something errors or the uncertainties. So we can say that all the chemical analysis can never be free from any type of the error or the uncertainties. There will always be something errors or the uncertainties. So due to that reason, any of the teacher always says to the students, if your results are up to that particular mark, these assume to be correct. In the previous lecture also, we have discussed that the change of error, the occurrence of the error with the time may be of different nature, and that depend upon the handling of the experiment, that depend from person to person. Due to that, we obtain these different type of graph. When we plot the graph between the error and the time, then we see that we can obtain these different type of graph. Next, the accuracy of the measurement can be explained in different ways. We must always kept in mind that the accepted true value will always be taken in mind for the comparison. If we have something standard value, then and only then we can compare our observable value with that ideal value. So we must always have something ideal value or something true value. If there, if our results, if our observable values means the results differs from the ideal value or the true value, then these results will always have something error. Now, what is the error? In the previous lecture also, we defined the error. That is the difference between our observable result and the ideal result. So the difference is called an error. That may be the positive one or that may be the negative one. So that's the difference between the real value, real means observable values, and the ideal value, that is the true value. And it is also a known fact that in all kind of experiments, in all type of measurements, whether they are related with the weight or the volume or the pH or any other thing, that all these experiment, all these measurements have only the limited accuracy. The results will always differ from the ideal value, or you can say the actual values. So we can say that there is always something error, means always something uncertainties with our results, with our observable results. So these errors can be reduced if we do the same experiment to a multiple time. Means if we repeat the experiment and again repeat the experiment, then there will be the chances of reduction of the error. Or we can then, means in other word, we can say now there will be the chances of better results with the less error. Errors may be of different type. Errors may be of different types, and these different type of error may be the absolute error. हम एरर को जब डिफाइन करते हैं तो अब उसको हम डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं. तो फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर. मींस व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value with regard to the sign is called the absolute error. It is reported in the same unit as the measurement. Means if we are taking the volume in ml, ideal value in ml, our observable value in ml, then the difference will always be in the ml.
So that's the meaning of that line. It is reported in the same units as the measurements. It always bear something sign. Absolute error is equal to the ideal value minus xt. Xi is the observed value and xt is the true value. Xi is the observed value and xt is the true value. Never confused with these two terms. True value means the ideal value. कभी आप ये ना मान ले I is the ideal value. I here is used for observed value. Or you can use the representation on there, यानी आप अपने अनुसार आप इसकी रिप्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं. Next is the example. If we have a sample 2.72 gram of the sample of any of the material is analyzed to be 2.52 gram, then the absolute error is observed value minus true value. The observed value is 2.52 and the true value is 2.72. Means हमारे पास 2.72 ग्राम कोई सैंपल था, हमें दिया गया, लेकिन जब हमने उसको एनालाइज किया तो हमने जब उसको मेजर किया तो हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट कितना है 2.52. सो नाउ व्हाट्स द एरर? minus 0.20 gram. That is the negative error. The absolute error is also called as the mean error because in some of the cases the measured value may be the average of different or the several measurements. During the titration also, we repeat the experiment to a multiple number of times. First reading, second reading, third reading, means उन सभी का फिर हम क्या ले लेंगे? Average. So that's why the absolute error is also called as the mean error, because in almost like in the titration cases, the measured value is generally taken as the average of several measurements. The mean value can be determined by taking the average difference with regard to the sign of the individual test results from the actual value. Next one is the relative error. Next one is the relative error. Relative error. The absolute or the mean error expressed as a percentage of the true value, then it is called as the relative error. So that's the difference between the absolute error and the relative error, and it is generally expressed in terms of the percentage error. Now what is the percentage error? The percentage relative error is the ratio of absolute error and the true value multiplied by 100. That is called as the percentage error. Second one is the percentage PPT error, where we multiply by 1000 in place of the 100. In percentage PPT, relative error is the ratio of absolute error to the true value multiplied by 1000. Now we have an example. If a 2.72 gram of the sample of a material is analyzed to be 2.52 gram, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया, सेम लिया था, then the relative error in terms of the percentage or in terms of the PPT, यानी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे? फार्मूला अभी आपको बता दिया गया था. तो एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले. तो दैट्स द डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. Observable value here is the 2.52 multiplied by ideal value, the true value, that is the 2.72 gram. Answer comes out to be minus 0.20 gram. Now we will find out the error, the relative error in terms of percentage. So the percentage relative error is equal to absolute error divided by true value multiplied by 100. So what is the absolute error?
minus 0.20 divided by true value, that is the 2.72, multiplied by 100. Now the answer comes out to be minus 7.2%. Next one is the relative error in terms of the PPT, parts per थाउजेंड. आपने पहले पढ़ा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. ये पीपीटी है यहाँ पे, दैट इज द पार्ट्स पर थाउजेंड. ये वो पीपीटी भी नहीं है जो कि आप जब एसिड बेसिक रेडिकल्स डिटेक्शन करते हैं, फंक्शन ग्रुप डिटेक्शन करते हैं, उसके दौरान जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिनको भी आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं. बट हियर दैट पीपीटी इज द पार्ट्स पर थाउजेंड. नाउ द आंसर कम्स आउट टू बी minus 72 ppt. Now the next question. The result of the analysis are found to 36.89% compared with the true value of 36.98%. Then the relative error in terms of the percentage and in terms of the ppt is. So absolute error is given by the observable value minus ideal or the true value. The observable value is 36.89 and the true value is 36.98%. The answer comes out to be minus 0.09%. Now the percentage relative error is equal to absolute error divided by true value multiplied by 1000. Now put these values. Absolute error is 0.09. Put it here. True value is 36.98 divided by true value. True value is, what is the true value? That is the 36.98. That is the true value, 36.98 multiplied by 100. Answer comes out to be minus 0.27%. Next one in terms of the PPT, parts per thousand. Just put the values here. The answer comes out to be minus 2.7 ppt. Now we will define some basic definition, some basic terms. What are highly accurate results? The results better than 1% error are called highly accurate results. Now what are moderately accurate results? The results better than 1 to 5% error are called as the moderately accurate results. Now what are the low accurate results? The results better than 5% error are called as the low accurate results. So these are the three different terms related with the accuracy, or you can say the results. Which type of results called the highly accurate, which type of result called as the moderately accurate, and which type of results are the low accurate results. So you must have to cram that data. Next one, the calculated value. The most commonly accepted value is called as the calculated value. Now what is the spread, or you can say the range? After these terms we will also solve some numericals related with all these terms. Now what is the spread or the range? Denoted by capital W. The difference in between the largest and the smallest result in the given set of data is called as the spread. For example, कोई क्लास है जिसमें किसी बच्चे के मार्क्स आ गए, किसी के कम भी आए, किसी के ज्यादा भी आ गए, तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिजल्ट, किसी बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो लार्जेस्ट रिजल्ट है, किसी बच्चे के सबसे कम मार्क्स आए वो जो सबसे स्मॉलेस्ट रिजल्ट आ गया. उनके बीच का जो डिफरेंस है, हाईएस्ट मार्क्स एंड द लोएस्ट मार्क्स के बीच का डिफरेंस, नाउ दैट हियर कॉल्ड एज द स्प्रेड, और यू कैन से द रेंज डिनोटेड बाय W. नाउ व्हाट इज द डेविएशन which is denoted by delta? The difference between any one value from the set of data. For example, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी क्लास में किसी बच्चे के 100 में से 99 आ गए, 100 भी आ गए, 99,
किसी के 70 है आ गए, 60 भी आ गए, 30 भी आ गए, 20 भी आ गए, 10 भी आ गए 100 में से। सो दैट इज द सेट ऑफ डाटा। फिर अब हमें करना क्या है, डेविएशन मींस द डिफरेंस बिटवीन एनी वन वैल्यू। हम कोई एक वैल्यू ले लेंगे, जो बच्चों के मार्क्स आए हैं किसी एक वैल्यू को हमने ले लिया, एंड द अरिथमेटिक एवरेज फ्रॉम द सेम सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज द डेविएशन। और हमने क्या किया, जितने भी जो भी रिजल्ट आया था उन सभी का हमने क्या ले लिया, अरिथमेटिक एवरेज। मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 के कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे, सभी के रिजल्ट का हमने अरिथमेटिक एवरेज लिया। उसके बाद हमने हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का उस एवरेज के साथ क्या देखा, हमने देखा डिफरेंस। नाउ दैट कॉल्ड डेविएशन, कि उस एवरेज जो वैल्यू है, जो एवरेज जो रिजल्ट है किसी भी बच्चे का, एवरेज वैल्यू से कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंस है। नाउ दैट कॉल्ड डेविएशन, नाउ दैट कॉल्ड डेविएशन। Smaller the difference in between the individual value and the average value of the given set of the data, greater will be the precision। उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रिसीजन। तो वो वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी जो एवरेज वैल्यू के ज्यादा नजदीक होगी। द डेविएशन हैज नेवर बी एनी टाइप ऑफ साइन। जैसे हम एरर के साथ साइन लगाते थे, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, we will never put any type of sign with the deviation, no positive sign, no negative sign। next term is mean और the average deviation। जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि हमारे पास गिवन सेट ऑफ डाटा था, पूरे डाटा का हमने अरिथमेटिक एवरेज ले लिया, फिर हर स्टूडेंट की के जो रिजल्ट था उसको एवरेज वैल्यू के साथ क्या देखा, उसका डिफरेंस देखा, जो डिफरेंस आया दैट कॉल्ड डेविएशन। हर स्टूडेंट की हमने डेविएशन निकाल ली, जो भी डेविएशन की हमारे पास पूरी एक लिस्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, वो जो डेविएशन की जो वैल्यू आई उसी को यूज करते हुए अब हमें नेक्स्ट टर्म यूज करनी है यूज, एंड दैट टर्म इज द मीन और द एवरेज डेविएशन, मीन्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन। अब हमें उन सारे के सारे डेविएशंस का अरिथमेटिक क्या लेना है, मीन। सो द अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन of all the individual measurements is called as the mean or the average deviation, that is denoted by small d। हम इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखाएंगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं। Now what is the standard deviation? Here is the formula of standard deviation, square root of x1 minus x bar होल ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर सेकंड जो वैल्यू है x2 माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर x3 माइनस x1 x2 x3, ये हर एक की वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। नेक्स्ट वन इज द वेरिएंस, s स्क्वायर से जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। हर चीज को हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल के अंदर, जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इन सभी का हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करके आपको दिखाएंगे। The square of the standard deviation is called variance. The square of the standard deviation is called the variance. Now, what is the relative standard deviation? The ratio of standard deviation to the mean value multiplied by 1000 is called as relative standard deviation. Means standard deviation divided by mean value multiplied by 1000. Now that is the RSD, relative standard deviation. What is the coefficient of variance, which is represented by CV? The ratio of standard deviation to the mean value multiplied by 100, that is called as the coefficient of variance, while if we multiply it by 1000, that is called relative standard deviation. So that is the slight difference between these two terms. So now you can compare also these two terms, relative standard deviation and the coefficient of variance. Now, what do you mean by the term rejection of results? Rejection of result means if any of the delta value is greater than or equal to 4D, then that value from the given set of data will be rejected. हम किस वैल्यू को कहेंगे
के that value rejected, that data जो आपके पास कंप्लीट डाटा होगा उसमें उसमें सिर्फ हम उसी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे इफ द डेल्टा वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4d। हम ये प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको न्यूमेरिकल के अंदर। ह्यूज डेविएशन, द डेविएशन of the rejected values is called as the Hughes deviation। अब हम लेंगे न्यूमेरिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। Now that is the question, from the given set of data 21.68 21.66 21.67, so that is the given data. In that, by using that given data, calculate all these things, means calculate spread, calculate mean value, deviation, mean or average deviation, standard deviation, variance, coefficient of variance, सीवी जिसे हमने कहा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, रिजेक्शन ऑफ रिजल्ट्स जैसे भी बताया गया था ग्रेटर देन और इक्वल टू 4d, वो सारी चीजें अब हम प्रूव करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द स्प्रेड? हमने बताया था दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डाटा व्हिच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, that is the 21.68, and what is the smallest value? 21.66. Now take the difference of these two values. So 21.68 minus 21.66, answer comes out to be 0.02, so that is called the spread. Next one, अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे फ्रॉम 2 to 4। देखो हमने लिखा 2 to 4। रिजल्ट हमने लिखेंगे सबसे पहले, फिर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, अभी आपको निकाल के दिखाएंगे। नेक्स्ट वन इज द डेविएशन, एक्स माइनस एक्स बार, जो मीन वैल्यू हम ले लेंगे। हमने बताया था ना गिवन सेट ऑफ डाटा जो है, गिवन सेट ऑफ डाटा उसका मीन ले लें आप, मीन वैल्यू, और उसको हर एक वैल्यू के साथ क्या देखेंगे? डिफरेंस, दैट कॉल्ड द डेविएशन। मीन डेविएशन, समेशन ऑफ ऑल दिस डेविएशन, मींस एवरेज लेना है हमें। नेक्स्ट इज द डेल्टा स्क्वायर। अब हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, x1 21.68, x2 means second data 21.66, third data that is the 21.67. Now what will we do? We will take the sum of all these, 65.01, that is the sum of all these values. Now what will we do? We will take the mean of all these. How many values are these? These are three number. These are three values. So the total sum of all these values, that is the 65.01, that is the summation x divided by total number of values. These are the three number. The value of n is 3. So answer comes out to be 21.67. Next one is the deviation. First value deviation. देखो first value here is x1 is the 21.68, and the deviation of that value from that mean value, that is the 21.67 here. So what's the difference between these two? What is the difference between these two? 21.68 minus 21.67, 0.01. Now take the difference for the second value. Second value is 21.66 minus 21.67, that is the mean value. Answer comes out to be 0.01. We will never use positive or the negative sign for the deviation. हमने पहले ही डिस्कस किया था, हम एरर में यूज करते थे पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन, बट इन केस ऑफ द डेविएशन we will just take the difference. No positive sign, no negative sign. Now for the third one, 21.67 minus 21.67 comes out to be 0. Now take the sum of all these. Take the sum of all these deviation. Answer comes out to be, the sum of all these will be 0.02. Now we will in the next step, we will take the mean deviation. Means sum of all these deviation, which we have already taken here, that is the 0.02,
divided by the total values. Total values are 0.01, 0.01, 0.00. These are the three number. Divided by 3. Answer comes out to be 0.006. That is the mean deviation. Now we will take, what we will do? We will take delta square is equal to x minus x bar whole square. So what is the delta here? Delta here is for the first value, देखो for the first value 0.01. So 0.01 square, that comes out to be, देखो that's the value 0.0001. Next one 0.001. Again take the square of that. Result will be the same. Next one is the 0 here. Something 0. Answer will be in 0. Take the sum of all these. Sum of all these is 0.0002. Now the point number 5, standard deviation. Standard deviation formula is x1 minus mean value whole square plus and so on second value, third value whole square root divided by n minus 1. Put all these value here. Or in other word, you can say the summation of all these above values, summation of delta square, which we have already taken here. So summation is 0.0002. Put that value here. Divided by n minus 1. Total number of values are 3 number. So n value is 3. So 3 minus 1. Answer comes out to be 0.01. So that is about the standard deviation. Next, point number 6, variance. Square of S. So what is S here? 0.01 is equal to, आपने इसका स्क्वायर किया तो आंसर क्या आ गया? 0.0001. S का सिर्फ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या किया यहाँ पे? स्क्वायर. That's the variance. Next one, point number 7, relative standard deviation. That is equal to standard deviation divided by mean value multiplied by 1000. What is the standard deviation? हमने ऊपर कैलकुलेट किया था. That is 0.01. What is the mean value? Put all these here. 0.01, that is the standard deviation. देखो जी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. Mean value 21.67. देखो ये हमने यहाँ पे देखो ये कैलकुलेट कर रखी है. Multiplied by 1000. Answer comes out to be 0.46. Next one, coefficient of variance. Multiplied by just 100 किया है. That's the difference. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 0.046. Next one is rejection of the result. हमने क्या बताया था रिजेक्शन ऑफ द रिजल्ट के बारे में? 4D कैलकुलेट करें. 4 मल्टीप्लाइड बाय D. जब D क्या है? 0.006. देखो ये रहा मीन डेविएशन. देखो ये रहा 0.006. हमने यहाँ पे पुट किया. बोलो आंसर क्या आया? 0.024. नाउ सी दैट, बट वी विल सी कि नन ऑफ द डेल्टा वैल्यू, देखो ये जितनी भी डेल्टा वैल्यू है, देखो ये डेविएशन वाली वैल्यू है. देखो 0.01, 0.01, 0.00 मींस नन ऑफ द डेल्टा वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट? 4D. इनमें से क्या ये कोई वैल्यू 0.01, क्या ये 0.024 से बड़ी है? नो. क्या दूसरी वैल्यू 0.01, 0.024 से बड़ी मींस 4D से बड़ी है? नो. एज नन ऑफ द डेल्टा वैल्यू, जो ऊपर जो तीन वैल्यू है वो 4D से ग्रेटर या इक्वल टू नहीं है. एज नन ऑफ द डेल्टा वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.024. सो व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट नन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ डाटा कैन बी रिजेक्टेड. हम किसी भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते. So that is the numerical. अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं इसी टाइप से अगले डाटा के साथ. From the given set of data 7.08, 7.21, 7.12, 7.09, 7.16, 7.14, 7.07, 7.14, 7.18, 7.11, देखो वही डाटा और वही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. अब आप साथ की साथ अपनी कॉपी में भी कैलकुलेट करते रहें, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल अभी हम पीछे सोल्व कर चुके हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ
In the same way as we solved the previous numerical, we will solve the same numerical. वहां पर हमारे पास फिर डाटा के अंदर 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा वैल्यूज हैं. दैट द ओनली डिफरेंस. तो आंसर नंबर 1, सबसे पहले स्प्रेड द लार्जेस्ट वैल्यू. विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू? देखो 7.21, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू. विच इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? 7.07. 7 पॉइंट, देखो आप ध्यान से देखें, 7.07 से छोटी कोई नहीं है. तो मीन्स अब हम डिफरेंस लेंगे 7.21 लार्जेस्ट वैल्यू माइनस 7.07, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. द डिफरेंस कम्स आउट टू बी 0.14. Now we will solve in the same way the question number 2 to 4. Results जो भी हमारे पास डाटा है, फिर नेक्स्ट मीन वैल्यू ले लेंगे हम, फिर डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर स्क्वायर लेंगे हम डेल्टा का, डेविएशन का स्क्वायर. देखो ये सारी वैल्यूज x1 x2, देखो ये पूरा जो गिवन वैल्यूज थी सारी हमने ले ली. उसके बाद इन सभी का हम क्या लेंगे? मीन, एवरेज लेंगे सबसे पहले. तो मीन जब निकालेंगे उससे पहले सभी का समेशन कर लेते हैं, सम कर लेते हैं. द सम ऑफ ऑल दीज सेट ऑफ वैल्यूज कम्स आउट टू बी 71.30. आप सम करके देखें इन सभी वैल्यूज का जो सम है, दैट कम्स आउट टू बी 71.30. नाउ टेक द मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल डाटा कितना है, कितनी वैल्यूज है हमारे पास? टोटल है 10 वैल्यूज. तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 10. तो 71.30 जो सम था इन सभी वैल्यूज का, उसके बाद n की वैल्यू 10 हो गई. तो नाउ व्हाट्स द रिजल्ट? 7.13, दैट इज द मीन वैल्यू. नाउ फाइंड आउट द डेविएशन फॉर ईच ऑफ द वैल्यू. ये जितनी भी वैल्यू है 7.08, हाउ मच इट डेविएटेड फ्रॉम 7.13 मींस फ्रॉम द मीन वैल्यू. अब हम इनका डिफरेंस लेंगे, दैट कॉल्ड द डेविएशन हियर. तो x क्या है यहाँ पे? 7.08. x बार मींस ये एवरेज वैल्यू क्या है? 7.13. इन दोनों का डिफरेंस. एंड वी विल नेवर यूज द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. We will use the positive or the negative sign only with the errors. So 7.08 minus 7.13, 0.05. Next one is 7.21. अब हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो आंसर comes out to be 0.08. अब हम 7.12 इसका डिफरेंस लेंगे मीन वैल्यू के साथ. नेक्स्ट 7.09 का डिफरेंस लेंगे मीन वैल्यू के साथ. अब 7.16 का डिफरेंस लेंगे. अब 7.14 का डिफरेंस लेंगे. 7.07 का डिफरेंस लें. Next, we will take the difference of 7.14 with the average value. Now we will take the difference of 7.1218 from the mean value. Now we will take the difference between the last value, that is the 7.11, with the average value, with the mean value. After taking the difference means we find out the deviation of each set of values from the mean value. Now take the sum of all these deviations. The sum of all these deviation comes out to be 0.36. If you take the sum of all these, the answer comes out to be 0.36. Now we will take the mean of all these deviations, that called the mean deviation. So mean deviation is equal to sum of all these deviations divided by the total set of values. The total set of values, that is the value of n here. Now put the values 0.36, that is the total sum of all these deviation divided by total set of values here. The total set of values here are 10 in number, so the value of n is 10 here. The answer comes out to be 0.036. In the next step, we will find out the delta square. We already have the value of delta. We have a set of delta values. Dekho, see here, these all are the set of delta value. Now we have to take the square of all these. Now take the square of all these values. यहाँ पे हमने rounding off किया है. Square of first value 0.05. देखो हमने लिया. Next we will take the square of 0.08. Next 0.01. Square of 0.04. Square of 0.03.
square of 0.01, next square of 0.06, next square of 0.01, square of 0.05, square of 0.02, हमने सभी का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हमने इन सभी का सम भी कर दिया। ऑल द डेल्टा स्क्वायर वैल्यूज का हमने क्या किया यहाँ पे सम, क्योंकि इसको नेक्स्ट जो हम पार्ट सोल्व करेंगे उसके अंदर इसको यूज कर लेंगे। नाउ द पार्ट नंबर 5 हियर, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस वैल्यू ऑफ एस। तो ये हमने पहले ही देखो सम अप कर रखा है, सम कर रखा है डेल्टा स्क्वायर का। देखो ये स्क्वायर ही करना था ना, हमने पहले ही कर लिया। तो देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 0.0182, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय n-1 10-1, टोटल सेट ऑफ वैल्यूज आर 10, आंसर कम्स आउट टू बी 0.045, so that is the value of s. Next we will find out the s square. Take just the square of that 0.045 square, answer comes out to be that one. After that we will find out the relative standard deviation. The standard deviation divided by the mean value multiplied by 1000, that is the relative standard deviation. अभी हमने कैलकुलेट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, दैट इज 0.045, अभी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, देखो जो हमने स्टार्ट में की थी 7.13 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आंसर कम्स आउट टू बी 6.3. Next we find out the coefficient of variance, that's the difference between the relative standard deviation and the coefficient of variance. Means in case of the relative standard deviation you multiply it by 1000, and here in case of the coefficient of variance you multiply it by simply 100. So that's the difference between these two formula. The answer comes out to be 0.63. Now the last one, rejection of the result, means find out the 4D. 4 multiplied by D. What is the D here? That is the D, mean deviation 0.04, जो हमने राउंड ऑफ करके लिखा है। तो आंसर comes out to be 0.16. Now compare all the delta values with that 4D. You will see that, you will observe that none of the delta value is greater or the equal to the 4D. मीन्स कोई भी ये डेल्टा वैल्यू 0.16 से बड़ी नहीं है, उससे छोटी ही है। So on that basis none of the value from the given set of data can be rejected. हम किसी भी वैल्यू का रिजेक्ट नहीं करेंगे। So thank you, that all about the today's session, today's lecture. जो आपको न्यूमेरिकल्स करवाए गए इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम में कोई भी जो न्यूमेरिकल आएगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। जो गिवन सेट ऑफ डाटा चेंज हो सकता है, कि जैसे मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाए, एक सेट के अंदर 3 वैल्यूज ही ली, दूसरे सेट में 10 वैल्यूज हमने ली, लेकिन फार्मूला तो यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। So thank you, that all about today's lecture. Thank you.